Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Arafat from FEI Higher Secondary Naugam. Today I am with chapter number 5. Chapter is about our environment. In this chapter, my topic is today on the methods of safe disposal of wastes. The wastes we generate in our house, in the commercial hub, in the offices, in the other means of generators where the waste is generating, how we dispose then of, what are the scientific methods of disposing those wastes. Following or the list of the methods of disposal of the wastes, especially solid wastes which we are generating day to day. And if we have a safe disposal of wastes, then we can get rid of these wastes and which are involving in creating the pollution in the environment. Let us visit out these methods one by one, and we use the methods it depends upon the nature of constituents present in that solid waste. वैसे हम वो मेथड अप्लाई करते हैं, डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द वेस्ट, और वेस्ट जो जनरेट है ये किस फॉर्म में जनरेट है, बायोडिग्रेडेबल फॉर्म है या नॉन बायोडिग्रेडेबल फॉर्म. उसी बेसिस पे उसी तरीके से हम मेथड भी, साइंटिफिक मेथड भी अप्लाई करते हैं. Here are the following methods in disposing of the wastes, especially solid wastes. First one method is the segregation on site. तो ये एक important यहाँ पे है. On site means in our homes, in offices, in the residential areas, at hospitals, at commercial markets. We should have on spot segregation of solid wastes. You know that solid wastes or the substances which are in two forms. One is the biodegradable and another is a non-biodegradable. Biodegradable solid wastes are known as the wet wastes, as it contains the waste of agriculture wastes, domestic wastes. It contains the animal wastes, animal excreta. And if we talk about the non-biodegradable wastes, that is, they are commonly known as the dry wastes, as they are non-biodegradable, cannot be decomposed by the microbial action, and such wastes are dry wastes, including the glass, plastic, rubber, and including the polythene, synthetic polymers, pesticides, insecticides, biochemicals, biocides, we can say, or radioactive wastes, nuclear wastes, or the non-biodegradable wastes. That means here the segregation on site is very important. It is very important parameter. And when there is the on-site segregation, मतलब on-site segregation में हमें इसको disposal of करना बहुत एक convenient method रहता है. It becomes very easier task to us to dispose of that wastes when we first of all having segregation at a point. Therefore, an initiative has been taken by the government of India, and in the Jammu and Kashmir it has been initiated by the government, that on 1st January 2006 की बात है, we distributed the two types of community bins, two types of bins, जिसमें हमें जिसकी वेस्ट की कलेक्शन, बिन्स और फॉर वेस्ट कलेक्शन, हमने दो तरह के बिन्स अवेलेबल कराए in the general public में. In the general public we made the available of two bins. One is the green colored bin. Another is the blue colored bin.
it is for the collection of these two bins, or for the collection of the solid wastes, as the no bio green green is for the collection of the biodegradable biodegradable wastes, and the blue is here for the non-biodegradable wastes. नॉन बायोडिग्रेडेबल वो हमने ये इनिशिएटिव हमने इस डेट पे लिया है, जो हम आज भी प्रोवाइड करते हैं टू द रेसिडेंशियल होम्स, टू द मार्केट्स, टू द कमर्शियल्स, टू द इंडस्ट्रीज, and make available at the hospitals, ऑफिस में हमने अवेलेबल कराए, पब्लिक प्लेसेस हमने अवेलेबल कराए ग्रीन बिन एंड ब्लू बिन. Blue bin is for the purpose of the collection of non-biodegradable wastes, and green bin is collection. Therefore, when here is a segregation on site at the point of generation, there is proper segregation of the wet waste and dry waste. I mean biodegradable waste and non-bio. आजकल आप देखिए कि community bin जो हमारे roads पे, हमारे पार्क्स के सामने, या जहाँ पे भी हमारे एसएमसीज के तरफ से जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर की तरफ से हमारे कम्युनिटी बिन्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हर एक जगह, हर एक लोकेलिटी में, और उनका हाल देखिए आप, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दोज कम्युनिटी बिन्स. बट हम यहाँ पे कसूरवार उनको नहीं ठहराएंगे, अथॉराइज्ड बॉडी को, बट कॉमन पर्सन एंड वन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व्ड. बिफोर दैट कम्युनिटी बिन्स इज दीज डेज मिक्सचर ऑफ both their wastes. It is, आप देखिए उनके हालात क्या है. There is no way of segregation. If you are provided by the two types of bins to your homes, to the offices, to the residential areas, to the restaurants, to the commercial areas, you should go on. You should be lean upon the advices provided us by the government, and a facilitation is made of these types of bins, and there should be proper segregation. Then when there is a proper segregation, तो biodegradable wastes पे हम apply कर लेंगे composting method. Other methods can be applied for its microbial decomposition, and non-biodegradable can be, इसके लिए हम दूसरा method apply कर देंगे. जब बदकिस्मती से हमारे पास community bins में जो हमें प्रोवाइड किया गया, इट इज मिक्सचर ऑफ बोथ द वेस्ट, देयर इज वेरी डिफिकल्ट टू द अथॉराइज्ड बॉडीज, to the concerned agencies to have a segregation of these wastes. Therefore, we should pay individual attention at every way, in every means. When we will be aware of the regarding of our environment, we have to clean it. We have to make our earth pure and clean. Then we should have take an initiative. We should have made the efforts, and we should aware ourselves regarding the disposal of these wastes. There should be an individual level attention. It is important when there is a therefore I mentioned in first of all I mentioned this point in the list of the segregation, in the list of the disposal of waste. Then we should follow up the strategy of the 3 R's. 3R. First R refers to the reduce. There should be a reduction in generating the waste. There should be. Then second R is for the reuse. You should go for the reusing the wastes. Some wastes, or we can be reutilize them, we can reuse them in converting in other means, other ways. After processing, we can reuse it in other means for different purpose. In the alternative purpose, we can use that type of waste. Then third R refers here the recycling. Here we send it for the making site.
मैन्युफैक्चरिंग साइट जहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे इसकी क्या होगी बेटा, रिप्रोसेसिंग, देयर कुड बी reprocessing. There, these three R strategy is very important in order to generate wastes to small extent. Then if there is the solid waste, I talk about the plastics, glass, polythene, synthetic polymers, other products, metals, non-metallic substances, we can, first of all, we should reduce. I will provide you one of the example. If if you will carry a permanent bag to you, if you are going for shopping, you are going to the market to buy something, then you should have a permanent type of bag, so that जब भी आपको कोई चीज खरीदना हो तो वही आप यूटिलाइज करो, दुकानदार को आप यहीं से अवॉइड कर लोगे, यहीं से आपको उसको मना करोगे क्या, say the no to the polythene here. Then when you are reducing something, when you pay attention towards the reduction in the wastes, in generating the wastes, then reduction is an important. When there is a reduction in generating the wastes, then the other parameter will be less, then reuse will be minimum, the recycling पे भी जो मैन्युफैक्चर है उस पे भी ध्यान कम चला जाएगा. Then if waste is generating now, we should then try to reuse them. You have a plastic bottles, make them the decorative purpose. आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो. You have a paper waste, you can make a decorative item, उसमें बना सकते हो, alternative use ला सकते हो. मतलब इस तरह हमारे पास जो metal tins भी होते हैं, alternative use ले लीजिए, या other जो waste, solid waste, not to make a mindset of I have to throw it, it is useless now, I am not using this, it is not in use at all. No, you should have an alternative way, you should utilize this object in other way, in alternative way. Then there is a reusing process. So reusing भी हमें, when you are using, when there is this waste, this article, this thing is now waste to you, you never say it is a waste. You have a mindset, you should be a designer towards utilizing the wastes in an alternative way, in different way. तो बहुत सारा डेकोरेटिव, बहुत सारे डेकोरेटिव्स आते हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं. पेपर से हम बिल्कुल डिज़ाइंस बनाते हैं. Here is the paper mache, we can use the wastes here, or the other plastic bottles we can have these days, have the alternative ways. You have the rubbers, you can use different way में, different purpose के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. Not in the way of throwing, just throwing them, you can reutilize them for the other purpose, for not one purpose, for the different purpose. Then when you are generating, you are not reusing, then send to it for the recycling. Reaches it to the making site, इसको हम वहाँ पे reprocessing होता है, इसका एक नया चीज फिर मेल्ट करके, मोल्ड करके एक नया चीज बनाते हो, नया चीज बना के ये आपके सामने वापस आता है मार्केट में for its reuse. तो इसको, this is the, you should importantly go to the 3 R's strategy in order to have a less generation of the wastes. These two pay in important role in generating the least solid wastes. Then here is the composting method. Here composting method is only for the degradable wastes. याद रखिए, it is only for the degradable substances. What are degradable substances? Which can be decomposed into organic to inorganic wastes. Which can be decomposed by microbial action, by the activity of microbes. It is a biological process wherein the biodegradable substance can be completely or partially decomposed and changed into organic manure.
convert it into a organic manure. This organic manure, when it becomes dark brown in color, it is known as humus. Humus is rich in nutrients, rich in it is rich in various nutrients, and it can be utilized by the farmers for the agriculture, in the agriculture fields, that because of these nutrients there is a proper growth and development in the crops, in the plants. Then here it is a useful way, और बिल्कुल हमने इससे क्या नजात पाया, क्या इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. When the biodegradable substances start to accumulate in a bulk, in a massive, in a high volume, then it becomes problematic and toxic and causes the air pollution, water pollution, soil pollution. Here therefore we should go for the composting. We dig a pit of some width of some dimension, length और breadth में उसका depth भी देते हैं हम अच्छा खासा, तो थोड़ा हम ये we get a farm yard manure by the composting method. आप इस pit को खोदिए घर के दूर, मतलब to some yards away you have a pit, you dig a pit, then you manage it for the composting purpose. You get here the manure, this organic manure you obtain, it is simply known as the compost. आपने एक कंपोस्ट का नाम सुना होगा, वर्मी कंपोस्टिंग. वर्मी कंपोस्टिंग ये मेथड है जिसमें अर्थवर्म्स यूटिलाइज होते हैं. Earthworms are utilizing in decomposing the organic matter, agriculture wastes, human excreta, aquatic wastes, aquatic products. They are decomposed anaerobically. Aerobically, we get a highly manure, organic manure, which is rich in nutrients and can be applied for them, can be utilized in the farming. बहुत बड़ी बात है. It has a positive role towards the environment. Composting, go for the composting for the biodegradable waste you are generating. You can manage, you can practice it in your homes, in your lawns. You can design it. When you don't know, you go to the community level. You go for the you go to the counselors, which can जो आपको ट्रेन कराएंगे कि किस तरह इसका facilitate करेंगे, how the compost pit is managing, how it can be drafted, and how you get the compost as the best organic manure and you can use it. जो हम किचन गार्डनिंग करते हैं, मतलब हमने घर के बाहर जो गार्डन हमने सब्जी वब्जी लगाए, मेवे वेवे लगाए, तो हम इजीली यो कंपोस्ट कैन बी यूटिलाइज्ड इन द किचन गार्डनिंग में भी ये इस्तेमाल होता है एज ऑर्गेनिक मैन्योर. वाई आपको क्यों बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर्स यूटिलाइज करने हैं, वो भी आपको मतलब पैसों में आता है. यू हैव टू बाय, यू देयर इज सम कॉस्ट एंड इट इज़ बेटर. एक तो हमारा एनवायरनमेंट, हम अपने एनवायरनमेंट को संभाल लेंगे और आपको मुफ्त में एक मेन्यूर भी तैयार होता है. एक छोटा सा जो गड्ढा आपने खोदा है, तो उसमें आप ये जो भी आपका एग्रीकल्चर वेस्ट, जो भी हमने मतलब हम जो वेजिटेबल्स फ्रूट जो हमारे बच्चा कच्चा रहता है या वेस्ट फूड रहता है, आमतौर जो हमारा फूड वेस्ट रहता है, या मतलब जो हमारे फार्म यार्ड से जो मेन्यूर निकलता है, एक्सक्रीटा निकलता है, मतलब एनिमल वेस्ट्स, चिकन वेस्ट्स, आफ्टर वी ड्रेस द चिकन, वी ड्रेस द एनिमल, वो जो वेस्ट निकलता है वो कंपोस्ट पिट में यूटिलाइज कर सकते हैं. कंपोस्ट आपको मिलेगा. व्हेन देन इज द लैंड फिलिंग. लैंड फिलिंग में क्या होता है? लैंड फिलिंग इज डन बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स. इसमें ये क्या होता है, ये होना चाहिए सॉलिड वेस्ट, और ये सॉलिड वेस्ट होना चाहिए कंक्रीट in unit, concrete in composition, concrete in composition solid. I talk about the plastics, glasses. जो हमारा कोई मकान पुराना हो जाता है, उसको हमें उसको
डिस्ट्रक्ट करना है, तो उसको उतारना है, गिराना में नया मकान बनाना, उसके लिए जो वेस्ट निकलता है, कंस्ट्रक्टेड वेस्ट जो निकलता है, ब्रोकन गिलासेस, मतलब ब्रोकन ब्रिक्स, वहाँ से स्टोन जो निकलता है, अदर आयरन वेस्ट निकलता है, आप एक लैंड फिल साइट, जो एक लैंड एरिया आइडेंटिफाई करिए विच इज़ वेरी लो। इस लैंड फिल को आप इससे सरफेस फिल कर लेंगे। देन लैंड फिल, हम ये जो लैंड है विच इज लो लेइंग, इट इज अ लो लेइंग एरिया, इस लो लेइंग एरिया हम ना इस पे एग्रीकल्चरल फील्ड, क्योंकि ये वाटर लॉजिंग, आमतौर जो लो लेइंग एरियाज होते हैं वो वाटर लॉजिंग होता है, वो भरा हुआ फंसा हुआ पानी रहता है इसमें, दैट that being that is a after in summer days it becomes a mosquito breeding and it causes various diseases, infection हो जाता है इस पानी में, इसमें जो पानी फंसा हुआ रहता है, then you have to fill it by the solid wastes, खासतौर non biodegradable wastes। फिर हम यहाँ पे बहुत सारे फीट, to some feet 5-6 फीट पे 5-6 फीट पे हम इसको मतलब सॉइल सरफेस बनाते हैं, सॉइल सरफेस, then it is surfaced by soil, then we can utilize this area for the agriculture practice, for the construction purpose, for the farming purpose। इससे पहले ये मतलब इट इज नॉट फॉर एनी पर्पस, हमने इसको लैंड को फिलअप किया। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं वो लैंड एरियाज विच आर लो, which are below the ground surface, you can fill it by the eroded matters, eroded solid matter, eroded solid matter, टूटा हुआ जो हमारा कंस्ट्रक्टेड डिसमेंटल्ड, कभी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होते हैं, होम रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, पुराना हो गया, आप उसको उतारना है नीचे, जो बहुत सारा वेस्ट, कंक्रीट वेस्ट या एरोडेड सॉलिड मैटर, आप इस लैंड को फिल अप कर लीजिए। फिर 5-6 फीट पे आप इसको मतलब सॉइल से कवर करिए। तो केयर शुड बी टेकन, देयर शुड बी नॉट बी एनी बायोमेडिकल वेस्ट, उस पर ध्यान देना है, क्योंकि उसकी लीचिंग होती है उन केमिकल्स के, एंड इट कैन कंटेमिनेट आवर रिवर्स, लेक्स, पाउंडर्स, ग्राउंड वाटर इज कंटेमिनेट, या न्यूक्लियर वेस्ट या रेडियो एक्टिव वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट शुड नॉट बी in your land filling while you are in the view of the land filling, in the opinion of the land filling, no land should not be filled by the electronic wastes, radioactive wastes, and you should not be filled by biomedical wastes, especially that it toxic, it contaminate the ground. Then is the incineration method. It is incineration जो होता है method, it is caused by incinerator। incinerator एक डिवाइस होता है, एक डिजाइनड डिवाइस होता है, डिजाइनड डिवाइस होता है जिसमें हम जो सॉलिड मैटर है उसको क्या करते हैं, हम सॉलिड वेस्ट जो होता है, सॉलिड वेस्ट उसको बर्न ऑफ करते हैं, बर्न ऑफ at a high temperature, that means completely burn off in the presence of oxygen gas, that is there is a aerobic burning, aerobic combustion. Here is the, then we can say in incinerator there is the incineration process, then there is the aerobic combustion। this combustible substances, जो solid waste में combustible substances है उनको हम burn off करते हैं in supplying the oxygen and at the temperature of the 1000 degrees Celsius, that means at high temperature the solid wastes are burned off, then there is the formation of gaseous particulate matter, gaseous particles, there is a least solid residue leaves behind in the incinerators. We can say the 70 to 80% it is efficient in work, 70 to 80% it is efficient in
efficient in work, and it generates the least residue in the form of ash, in the form of other unburnt incombustible matter. जो भी बचा खचा least रहेगा वो incombustible होगा, but combustible substance जो होता है वो burn होता है under the process of combustion, वो भी aerobic combustion में. इस पर incineration एक process है that is carried in the incinerator. It is a designed device जिसमें aerobic combustion burn off होता है solid waste, solid matter in the presence of oxygen, and the temperature of this device reaches up to the 1000 degrees Celsius. Then it has proved that its efficiency is 70 to 80%, and there leaves behind a little waste residue, and smoking is generating in this device, not so much. That it is a ये जो है incineration process जो है ये हम apply करते खास तौर biomedical we should not have open throwing of the biomedical waste. It is highly poisonous and toxic biomedical waste जो होता है solids. I talk about the solids biomedical wastes. So they are preferably in the hospitals, in the medical hospitals, in the medical institutions. There are the incinerators where they carry out the incineration process. So it is for the purpose खासतौर biomedical waste purpose के लिए ये बनाया जाता है. They are installed in the hospitals, medical institutions. And now there is the pyrolysis. It is also the process at which the temperature in this is 650 degrees Celsius to 1000 degrees Celsius. Solid waste जो होता है उसमें जो solid waste उसमें जो combustible substance होता है, combustible substances होता है, उनको क्या करना होता है? They are burned off, but in absence of pyrolysis में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दिया जाता है. In absence of oxygen. ये जो pyrolysis है जिसमें at a very high temperature range, at this temperature range the solid wastes are burned. There is a burning process, and there is a combustible substances in the solid waste which burn off, and but in the absence of oxygen, then it is the anaerobic, we can say there is an anaerobic combustion in the process of pyrolysis. It is also an efficient device here. 80 to 90% it is efficient in work in generating the very least residue, and very less gaseous pollutants are generating under the process of the pyrolysis. Also we can dispose of by burning process. It is a closed container wherein pyrolysis process जो burning होती है इस at the temperature range इस device का, जिसमें एक solid waste they contain the combustible substances वो burn होता है, और वहाँ पे जो chemical energy निकलती है या residues निकलते हैं उनको हम अलग अलग there is a separate collection. उनको अलग अलग तरीके से हम collect करते हैं, अलग अलग temperature range पे उनको हम combust उन chemical constituents को जो हमें मिलता है, जिसको temperature मिलने के बाद वो किसी और चीज में, here is a chemical reaction, number of chemical reactions takes place in the container. जो chemical constituent नया बनता है अलग टेम्परेचर पे वो हमें मिलता है, नंबर 1. नंबर 2 हमें इसमें एक केमिकल एनर्जी यूटिलाइज मिलती है. we obtain in this a chemical energy which we can utilize it for different, which can be harnessed. That energy is harnessed, is utilizing in other way. There is a generation of other chemical constituents. जब भी यहाँ पे ये solid waste इस pyrolysis में, तो there is a chemical, there is formation of other chemical constituents. There is formation of other chemical constituents, number 1. Number 2, there is a
releasing of chemical energy which can be utilized in other way for the other purpose. Dear students, it is all about the topic methods of safe disposal of wastes. These days we are generating, these are the following scientific methods through which we can dispose of safely the solid wastes. It is all about 1 minute I will take here. तो यहाँ पे 1 minute I will mention, I will conclude this chapter here today, क्योंकि इसमें थोड़ा है और इसमें एक तो आपको जो एक है इसमें मॉन्ट्रियल Protocol. Montreal Protocol is signed by the many countries which are related with the industrialization in running of the industries. They are utilizing the gas CFCs for different purpose. डिफरेंट पर्पस के लिए उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्टों ने इसको यूटिलाइज किया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिफरेंट पर्पस. तो जब हमने देखा गया है इट हैज एडवर्स इम्पैक्ट ऑन, ये मैंने पढ़ा है आपको, इट हैज एडवर्स इम्पैक्ट ऑन ओजोन लेयर. देयर इज द ozone layer depletion. तो हमने क्या देखा, because of the CFC there is a ozone layer depletion and there is the adverse impact in the ozone layer by utilizing the CFCs in various ways. आपको पता है मैंने ये डिस्कस किया है ओजोन लेयर डिप्लीशन में कहाँ पे इस्तेमाल होता है CFC. अब इन द व्यू बहुत सारे कंट्रीज आए ऑन अ वन टेबल, वो उनको बिठाया गया है कि वी आल्सो हैव डीप कंसर्न टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट एंड वी शुड प्रोटेक्ट इट एट लीस्ट. तो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाई गई है 16 सितंबर 1987 में, इस गारज से कि हमें ओजोन लेयर जो डिप्लीट होता है बाय द यूज ऑफ CFCs, इसको बैन लगाया जाए. its manufacturing should be stopped and its utilization in devices should be promptly stopped. मतलब कतई इसको यूज नहीं करना है. एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाई गई है और एक इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन एक डिजाइन किया है. और सब बहुत सारे कंट्रीज आए हैं नेशनल लेवल पे जो ये ध्यान रख के कि हमें अब इस पे पाबंदी लगानी है कि वी आर आल्सो एन इंडिविजुअल in an environment in the surrounding wherein we survive. तो ओजोन लेयर सबस्टेंस, ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सबस्टेंस को हमें फेस आउट करना है. इफेक्ट टेक प्लेस ऑन द 16 सितंबर 1986 में लिया गया है इनिशिएटिव, जिसके वजह से a Montreal Protocol came into existence, came into functional. By the Montreal Protocol, there is the formation of the various laws to the apply to the industrializations, industrial sector, the industrial workers, that there should be no use of the CFCs. It is a so order. तो ओजोन लेयर डिप्लीशन टू प्रिवेंशन के लिए इस प्रोटोकॉल को हमने अप्रूव कराया और इसको एग्जिस्टेंस में लाके in order to have prevention of ozone layer depletion. Ozone layer depletion is of the CFCs. There should be stopped the use of CFCs, and in the view
there is a Montreal Protocol. Montreal Protocol के बदौलत से हमने आज ओजोन लेयर जो है इसको प्रोटेक्ट किया, इसको प्रिवेंटिव मेजर्स में लाया गया है, क्योंकि ओजोन लेयर protect us by the ultraviolet radiations. And 175 countries signed the protocols in the Montreal, and including the India, which also signed this protocol. India is a developing country, although he signed this protocol to have a prohibit the use of the CFCs. And then another is the Kyoto Protocol. Another is Kyoto Protocol. Kyoto Protocol is for the जो हमें इमिशन जो निकलते इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस GHGs, ग्रीन हाउस गैसेस, इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, इसको प्रिवेंट करे. देयर शुड बी प्रिवेंशन, क्योंकि here is the threat of global warming. So that to have against the threat of global warming, it is because of the greenhouse gases. It is emission by the factories, by the industries, by the combustion process. There is the releasing of the greenhouse gases by the industrialization. There also at the international level, another protocol was signed by the different countries at the national levels, at the international level, national and international levels, and by the body of the UNFCCC, that is the United Nations framework. This means United Nations framework on climate, framework convention हो गए रूल्स. उन्होंने different countries they united in framework the convention on climate change. इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, इसके अंडर ही एक कायोटो प्रोटोकॉल एग्जिस्ट में लाया गया है, और इन 1992 में मतलब देयर शुड बी रिडक्शन इन द ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन. हियर दिस एंड प्रोटोकॉल जो है ये अडेप्ट किया गया है इन द कायोटो. तभी तो इसका कायोटो जापान में पहले वहां पे इसकी एक इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस बनाई गई. तो इन द वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ या रिडक्शन इन द greenhouse gases, and it comes into effect on force into then 11th Feb में 2005 में इसको इफेक्टिवली फंक्शन में लाया गया है. इस Kyoto Protocol came into effect on this date in order to reduce the release of greenhouse gases. One is the carbon dioxide gas, and 192 countries signed the document having the prevention of the global warming. There is a threat due to the emission of greenhouse gases. This level is concentrated in the atmosphere, and 192 countries have signed the documents, developed and developing countries, in reduction of the greenhouse gases. This comes into effect 11th Feb 2005 में प्रोटोकॉल को इफेक्टिवली हमने
वर्क में लाया. दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर आवर एनवायरनमेंट. और इसके साथ ये मेरा लास्ट लेक्चर, this is my last lecture about this chapter, and now inshallah I concluded this. I hope you understand about the Montreal Protocol and the Kyoto Protocol, and the 5th June is celebrated in every year as a World Environment Day. Thank you very much.